Next, we are using try and catch block. Try block is used to guard your programming if there is a chance of exception. हमारा जो जो प्रोग्राम है आपका, वो प्रोग्राम को एक प्रोटेक्शन देगा. मतलब हम मोबाइल में स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, इसका मतलब नहीं है हर वक्त हमारा ग्लास गिर जाता है. सो इफ इट इज अनएक्सपेक्टेड थिंग इज हैपन, इट इज प्रोटेक्टेड टू योर स्क्रीन. तो अगर मेरा 1 से लेकर 100 तक लाइंस ऑफ कोड है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 20 से लेकर 50 के अंदर कोई एक्सेप्शन आ सकता है, तो आई पुट दैट लाइंस ऑफ कोड इनटू द ट्राई ब्लॉक. मैं वो उसको ट्राई ब्लॉक में डालूं. नहीं नहीं, कॉपी करिया दरकार. Don't you have to copy, you have to put the line. You are writing the coding from 1 to 100, in between you have to include. सपोज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 20 से लेकर 50 लाइन नंबर तक कुछ एक्सेप्शन और एरर आ सकता है, तो यू पुट दैट लाइन इनटू द ट्राई एंड कैच ब्लॉक. ओके, नहीं ट्राई ର ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ଅଛି. ହଁ, ଯେମିତି ଫଙ୍କସନ ଡିଫାଇନ କରୁଛ ସେଇଭଳି, तो से ब्लॉक भीतर से ट्राई ब्लॉक टा पका. तो ट्राई ब्लॉक guards your programming. After the try block, then catch block will appear. The catch block is handle the exception. Try block give the protection to your programming. Catch block is used to handle the exception. It is used for handling the exception. It sends the execution to the attached catch block. Catch block is used to retry the operation. Catch block is used to retry the operation, and it is used to give the alternate solution. It is used to gracefully exit. It is not abnormally close your application. It must not be empty. It get a reference from the java.lang.exception object. Okay, so try block is used to guard your programming. Catch block is used to handle the exception. Clear? So try block handle the exception. It send the execution to the attached block. Catch block is used to retry the operation, and it is used to try an alternate operation. It is used to gracefully exit and return, and it must not be empty. Catch block must not be empty. Okay. It get a reference from java.lang.exception object. Clear? So how you have to write try and catch block? Suppose I have the code from 1 to 100. So I define try, then I define here catch. Catch exception E. I define catch exception E. Hey, Ananya.
हाँ, sorry. The try block is used to give a protection to your code. It is used to give a protection to your code. सपोज मैं 1 से लेकर 100 लाइन तक प्रोग्राम लिख रहा हूं, लेकिन मुझे एक्सपेक्ट है कि 20 से लेकर 50 तक कोई भी एक्सेप्शन और एरर आ सकता है, तो आई पुट दैट लाइंस ऑफ कोड इनटू द ट्राई ब्लॉक. तो कैच ब्लॉक इज हैंडल द एक्सेप्शन. ओके, द ट्राई ब्लॉक गार्ड द प्रोग्राम, कैच ब्लॉक इज हैंडल द एक्सेप्शन. General purpose of catch block. So in the catch block, you have to give the exception class name. Suppose if I expect arithmetic exception will happen, so I pass here arithmetic exception. If I expect that arithmetic exception is happened, so I put here arithmetic exception. So when you define arithmetic exception, then you are only bound. So you are only capable to handle the arithmetic exception only. You cannot handle the other type of exception. Okay. मैं अगर arithmetic exception define कर रहा हूं, तो मैं सिर्फ arithmetic exception define कर सकता हूं, दूसरा कोई exception define नहीं कर सकता और handle नहीं कर सकता. The general purpose of catch block is what? Now it cannot deal with every possible error. What is the exception? You have to define. It will handle that type of exception only. It should not catch the base type of exception. If you expect, अगर आप expect कर रहे हो कि आपका try block में more than one exception आ सकता है, तो you can define the multiple catch block for single try block. एक single try block के लिए आप multiple catch block define कर सकते हैं. Okay? If you expect more than exception will happen. मतलब बारिश भी हो सकता है, धूप भी हो सकता है, बारिश भी हो सकता है, सर्दी भी हो सकता है. सर्दी के महीने पे स्वेटर भी पहनो, रेनकोट भी पहनो. Okay, so that type of thing is called as the word multiple exception handling. Okay. Okay, so that's it for today. Okay, so next we continue from Monday. अच्छा, मैं कुछ एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना, मैं कुछ असाइनमेंट तरह से कुछ एग्जाम कराऊंगा, वो अनाउंसमेंट चला जाएगा आप में. ओके, वो एग्जाम अटेंड कर. ओके, क्लास टेस्ट